Okay, previously, girls, we were studying about um, biodiversity, and in the last lesson, we completed the steps to conserve biodiversity and the endangered biodiversity species in Pakistan. Technically, the chapter of biodiversity is ended now, and today we will be starting a new chapter. Okay. So please, that's why I always say to you that please, everyone is supposed to join the class or the classes. It's very important for you to join your class, online classes. Okay. Yeah. Yeah. 1 second. Leah is present today, Leah Rani. Yes, ma'am. No, ma'am. Okay. जी लिया एब्सेंट है आज Yes, ma'am. ओके Present है सॉरी मैम. प्रेजेंट है और कोई Is कह रहा Yes. present. प्रेजेंट है कोई नहीं किसी भी लेसन में प्रेजेंट नहीं थी ना उसने अटेंडेंस मार्क की है मैम मैथ अब उसने वाले में मैथ की थी। क्लास ली थी. अच्छा चलो लेट्स सी उसने मैथ्स की क्लास ली थी फर्स्ट क्लास थी मैथ्स की Yes, ma'am. चलो लेट्स सी पता चल जाता है ओके सो आई वाज सेइंग दैट today we are going to start a new chapter and that is cells and tissues chapter number 4 जी इससे पहले previously we have studied about biodiversity as I have told you that we have completed that chapter the chapter of biodiversity and now we are going to study about this chapter that is cells and tissues and I prefer if you all will open your books okay so cells and tissues G please who is going to read this chapter Ma'am, which page number is this? I don't know I actually have it in PDF form Page number uh, 52.
Ma'am, can I read? Yes. The wing of a butterfly is a thin sheet of cells, and so is the shiny layer of our eyes. The Hmm. meat we eat is composed of cells, and its contents soon become part of our cells. Our eyelashes, fingernails, orange juice, the wood of our pencil, all are produced by cells. In this chapter, we will take a close look at cells and learn about their internal structure. We will also learn how specific cells group together to form tissues. Right. Okay. So basically, this was just an introduction that what are cells and uh, all organisms. Now recalling that all organisms they are composed of cells and some are composed of a single cell, but some like us they are composed of many cells. Okay, this is the basic ideology of a cell. Now next is our first topic, that is microscopy and the emergence of cell theory. Yes. The use of microscope is known as microscopy. The first compound microscope was developed by Zach Zacharias Jensen in Holland in Zacharias 50. in Hmm, Holland in 1595. It was simply hmm, a tube with lenses at each end, and its magnification ranged from 3x to 9x. Two hmm. important terms are used in microscopy, such Right. as magnification and resolving power. Hmm, Magnification is the increase in the apparent size of an object, and it is an important factor in microscopy. Resolving hmm. power or resolution. In the measure of the clarity of an image, it is Image. the Hmm. it is the minimum distance at which two objects can be seen as separate objects. Human naked Right. eye can differentiate between 2 points which are at least zero point 0.1 millimeter apart. Millimeters apart. This is known as the resolution of human eye. If we place Hmm. two objects 0.05 millimeter apart, human eye would not Hmm. be able to differentiate them as two separate objects. Hmm. Magnification and resolution can be increased with the help of lenses. Right. So I think it's quite evident and clear that they are saying that the first microscope was developed by Zacharias Janssen in Holland in 1595. Um, okay, he was a Dutch scientist. Right. Where was I? Over here. Okay, he was a Dutch scientist, and it was simply a tube with lenses. Now, basically, they are saying at that time its magnification was only 3 to 9 times. Now, there are two important key terms over here in microscopy which you need to know. Number one is magnification. Magnification means that you are enlarging the image. ठीक है? इमेज को बड़ा करना उसके साइज से. नाउ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट और इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप इमेज को उसके साइज से बड़ा कर रहे हैं तो वो इमेज क्लियरर भी हो.
क्लियरर वो कब होगी? जब उसके पिक्सेल्स अच्छे होंगे, ठीक है, जब उसके पिक्सल ज्यादा होंगे, जब वो हाई क्वालिटी पिक्चर होगी, ठीक है। तो उसकी जो क्वालिटी है, दैट क्वालिटी ऑफ दैट इमेज is denoted by the resolution. Okay, the resolution is the measure of clarity of an image, and magnification is the increase in the parent size, which means in normal language हम उसको zooming in और zooming out कहेंगे, ठीक है। अगर आप zoom in कर रहे हैं तो it means कि आप ज्यादा magnify कर रहे हैं, जितना आप zoom in कर रहे हैं आप उसे मैग्नीफाई करें, बट देयर इज अ पॉइंट जहां पे उसके पिक्सेल्स खराब होने शुरू हो जाते हैं इमेज के, ठीक है। वो पॉइंट वो होता है जब उसकी मैग्निफिकेशन और उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं रहती, ठीक है, और उसकी रेजोल्यूशन कम होता जाती है, आप मैग्निफिकेशन उसकी बढ़ा देते हैं, एंड एट दैट टाइम आपको इमेज जो है वो ब्लर्ड नजर आती है, जैसे अभी आपको मेरा बैकग्राउंड ब्लर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, और माई इमेज इज लिटिल बिट क्लियरर। ना ह्यूमन नेकेड आई, जो ह्यूमंस की रेजोल्यूशन है ऑफ आई, दैट इज 0.1 millimeters at least. At least human eye can differentiate with the naked eye. Humans can differentiate living things or organisms or things which are 0.1 millimeters apart in distance. अगर उससे हम कम कर देंगे डिस्टेंस तो फिर हमें वो एक ही चीज नजर आएगी, दो सेपरेट पॉइंट्स नहीं नजर आएंगे, ठीक है। इस बात की समझ आइए आपको? नो मैम। मैं बता दूं। ये शेयर क्यों नहीं हो रहा? शेयर। Now can you see the board? Yes, ma'am. Yes. Now if we have, let's say, 2 points, oh sorry, sorry, अच्छा जी, if we have, let's say, 2 points, अगर मैं एक ही कलर रखूं, इसका एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इसके करीब ही मैं बना रही हूँ, अभी ये विजिबल है, ठीक है, नजर आ रहे हैं ना, दो सेपरेट पॉइंट्स है, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्लोज कर लूंगी और ज्यादा, अभी भी ये नजर आ रहे हैं, राइट, लेकिन देयर विल बी अ पॉइंट जब मैं बनाऊंगी दो अलग पॉइंट सी, लेकिन वो आपको दूर से ऐसे लगेगा जैसे एक ही पॉइंट है, अनटिल अनलेस मैं उसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई नहीं करूंगी, ठीक है। ये होती है रेजोल्यूशन, दिस इज रेजोल्यूशन के दो पॉइंट्स हैं, वो आपको सेपरेट नजर आ रहे हैं, जब तक तो वो दो पॉइंट्स आपको सेपरेट नजर आ रहे हैं, ठीक है, तब तक इट मींस के योर रेजोल्यूशन इज फाइन।
अगर वो आपको सेपरेट नहीं नजर आ रही, चीजें ब्लर होती जा रही हैं, बेसिकली ये आप कह सकते हैं, इसमें दो वर्ड्स हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं। एक जूम, zooming in and zooming out, and this other word is blur. अगर अक्सर ऐसा होता है कि आप अम, कोई इमेज ज्यादा जूम इन करें तो वो ब्लर हो जाती है, ठीक है ना, उसकी एजेस ब्लर हो जाती हैं, नहीं होती? यस मैम, हो जाती हैं। हो जाती हैं। उसकी एजेस क्यों ब्लर हो जाती है? क्योंकि वो शार्प, आप फिर उसके बाद एडिटिंग अगर उस इमेज की कर रहे हैं, तो एडिटिंग के अंदर ऑप्शन आती है कि इस इमेज को HDR इमेज में कन्वर्ट कर दें, या HD इमेज में कन्वर्ट करें, या इस इमेज को शार्पन करें, ठीक है। जब आप उस इमेज को शार्पन कर रहे हैं, तो बेसिकली आप उस इमेज की आ, उसकी ब्लरनेस खत्म कर रहे हैं, ठीक है। ब्लरनेस खत्म करने का मतलब है कि आप उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ब्लर होना या ब्लर ना होना, इट डिपेंड्स ऑन द रेजोल्यूशन। अगर रेजोल्यूशन कम होगी तो इमेज ब्लर होगी, अगर रेजोल्यूशन ज्यादा होगी तो इमेज क्लियर होगी। अब इसमें मैं फिर आपको बताती हूँ, एक सेकंड। वीडियोस जब हम देखते हैं, ये बल्कि मैं एक सेकंड, सॉरी अगेन, कैन यू सी माय स्क्रीन? गर्ल्स, Yes, ma'am. कैन यू सी माय स्क्रीन? यस मैम। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? कौन सी? मुझे तो नहीं आ रही। एक सेकंड, मैं आपको दिखाती हूँ। ये यूट्यूब है, ठीक है, ये हर एक ने देखी हुई है, ठीक है, यू नो इट क्वाइट वेल, आई होप। जब हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ क्वालिटी आ रही है, ये सबने देखा हुआ है ना, क्वालिटी पे सब जाते होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस अब दे मैम। आर शोइंग यू डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ द वीडियो, starting from auto 144p, 240p, 360p, 480p, 720p एंड 1080p, जिसके ऊपर HD लिखा हुआ है, राइट? ये रेजोल्यूशंस हैं। अब देखें, इसको 144 पे करके देखते हैं कि क्या होता है। क्या होना चाहिए वैसे टेक्निकली? देख रहे हो क्या हो रहा है? Yes, यस ma'am. मैम। क्या? Cells are the smallest living units of an organism. All cells द have three इमेजेस दे आर नॉट क्लियर, ब्लर्ड हैं। ये क्यों है? क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन कम है। अब इसकी रेजोल्यूशन मैं चेंज करती हूँ, वेट। सी द डिफरेंस? यस मैम। Yes, ma'am. फर्क नजर आया ना? कितना हाँ, फर्क मुझे है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा फर्क है। वाई? ये फर्क, दिस इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन। बेसिकली रेजोल्यूशन का
ये मतलब है कि जब दो इमेजेस एक दूसरे के जब रेजोल्यूशन कम होती है तो इमेज क्लियर नहीं होती, जब रेजोल्यूशन बढ़ जाती है तो फिर इमेज जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाती है। अब दिस इज अ वीडियो रिगार्डिंग सेल्स, ठीक है। ये वैसे भी मैंने आपको दिखानी थी। लेट्स वॉच दिस वीडियो फर्स्ट, ठीक है, देन वी विल गो बैक टू द रीडिंग पार्ट अगेन, ठीक है। शुड आई प्ले इट? Yes. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts.
They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria. Yes. Okay. G girls, are you still there or not? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. so you have watched the video. Yes. Yes. Okay, right. So it's quite fascinating watching all the functions of a cell like that, the way they are showing in a three-dimensional pattern. Yes, ठीक है ma'am. जी? Yes, it is. तुम जरा अपनी आंखों से होश में आओगी तो तुम्हें पता चलेगा. अच्छा जी, सो वी वर टॉकिंग बेसिकली हम मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन से बिल्कुल सेल स्ट्रक्चर के ऊपर चले गए डायरेक्टली. एनीवेज इट वाज एन इंटरेस्टिंग वीडियो. अच्छा है आप लोगों ने एक दफा देख लिया, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. So we were studying about magnification and resolution, and मैंने आपको बताया कि resolution क्या होती है. Now we are going to study about types of microscopes. G. Now there are two types of microscopes: light microscope and electron microscopy. Now, two types of microscope, light microscope and electron microscope, they are used in microscopy. A microscopy is the study of cells or study of anything using a microscope, right? Okay, anyone who would like to read this light microscope topic?
Ma'am, can I read? You were already reading. Aisha, can you read? Zoha, can you Yes, read? ma'am. Ma'am, yes. Okay, read Aisha, please. A light microscope works by passing visible light through a specimen. It uses two glass lenses. One lens produces an enlarged image of the specimen, and the second lens magnifies the image and projects into viewer's eye onto photographic film. A Hmm. photograph taken through a microscope is called a micrograph. Right. So a light microscope works by passing visible light through a specimen. So when we are using a light microscope, we basically pass light through the specimen and we observe the specimen using light. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई और भी तरीका है specimen observe करने का? Yes, there are other ways as well by which we can observe specimens. Now, from left to right, we have different microscopes which have developed over time. Uh, ठीक है, this was very old sort type of microscope, and then it developed to this. This is a simple microscope, and then we have developed it up till this type of microscope. This is a compound microscope. ठीक है, this is a simple just microscope. The invented one wood की बनी हुई है ये. Then a simple and then a compound. Okay. So basically, when we see a micrograph on the page of a book, we see some words like LM109X printed on along side of the edge of the micrograph. It tells us that the photomicrograph was taken through a light microscope and that the image has been magnified 109 times. ठीक है? This is the important thing. ये जो इसका ये जो ये मेंशन्ड होता है ये इसके साथ जिसके साथ एक्स के साथ जो चीज मेंशन हुई भी होती है इट बेसिकली टेल्स अस कि कितने टाइम्स इमेज को मैग्नीफाई करके आपके सामने वो इमेज लेके आई गई है. ठीक है जी. आयशा प्लीज कंटिन्यू. A Yes, light ma'am. microscope A light can magnify. microscope a light microscope can magnify objects only about 1,500 times without causing blurriness, i.e. its magnification is 1500x. Its resolving Hmm. power is zero point 0.2 micrometer and 1 micrometer is equals to 1 over 1000 millimeters. In other words, the light microscope cannot resolve distinguish objects smaller than zero point 0.2 micrometer. It is about the size of the smallest bacterium. The image of bacterium can be magnified many times, but light microscope cannot show the details of its internal structure. Right. So basically, its magnification is 1500 times, its resolving power is zero point 0.2 micrometers. A micrometer, 1 micrometer equals to 0.00001, 0001 millimeters. ठीक है? And in other words, they are saying that light microscope with the light microscope you can see only the external appearance of a bacteria. You can view it, uh, you can see the apparent image of it, but you cannot view the details of its internal structure. ठीक है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की जो डिटेल्स हैं वो आप व्यू नहीं कर सकते यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप. ओके जी. Electron microscope. Yes.
Electron microscope. It is the most advanced form of microscope. In electron microscope, object and lens are placed in the vacuum chamber and a beam of electrons is passed through object. Electrons pass through a reflected form object and make image. Electromagnetic lenses enlarge and focus the image onto a screen or photographic film. Electron microscope has much higher resolving power than light microscope. The most modern electron microscope can distinguish objects as small as zero point 0.2 nanometer, and 1 nanometer is equals to 1,100 millimeters. It is a thousand-fold improvement over light microscope. Electron microscope can magnify objects about 250,000 times under special conditions. Electron microscope can detect individual atoms, cell organelles, and even molecules like DNA and protein are much larger than single atoms. Biologists use two types of electron microscopes: transmission electron microscope and scanning electron microscope. In transmission electron microscope, electrons are transmitted through the specimen. Uh, a specimen TEM is used to study the internal cell structure. Electron microscope has revolutionized the study of cells and organelles, but cannot be used to study the life processes because the It's specimen organelle. must be Achha. yes, Nothing. but It's an specimen must be organelle. held organelle. But Yes. specimen but specimen must be held in a vacuum chamber. All must be held in a vacuum chamber. All air must be removed to study the life processes, e.g., movement of the amoeba. A light microscope is better. All right. Yeah. Okay, so basically an electron microscope, it is the most advanced form of microscope which exists right now. And why did we in the first place went into an electron microscope or going into electron microscopy? Because a light microscope was not able to portray us the internal details of the structures of a cell specifically. And डेफिनेटली जब एक सेल का नॉर्मल इंटरनल स्ट्रक्चर वो नहीं बता सकता, ये जितनी भी चीजें जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं ये हमें इनकी जो डिटेल्स हैं इनकी जो डेप्थ्स हैं वो हमें लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं पता चली, वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चली है. जस्ट लाइक क्लोरोप्लास्ट, व्हाट इज इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, then what is a mitochondria, what is inside a mitochondria, these all are cell organelles. ठीक है, they are known as organelles. आखिर में जो ई है we don't pronounce it. ठीक है, organelle बोलते हैं इसको. तो इसके अंदर जितना भी सेल्स के अंदर मटेरियल होता है अपेरेंटली हमें जो नजर आता है इन लाइट माइक्रोस्कोप, दैट इज ओनली द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन. जो आपकी मतलब लेबोरेटरीज के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप्स पड़ी हुई है उसमें न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन विजिबल होता है, साइटोप्लाज्म विजिबल होता है एट मोस्ट. बट उससे ज्यादा फर्दर डिटेल्ड इमेजेस जो हैं वो विजिबल नहीं होती इसकी एक सेल की. तो दैट्स व्हाई द साइंटिस्ट मूव ऑन टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. And in this type of microscopy, the electrons are passed through the object. And now you know that electrons, the size of an electron, it's very, very, very small. एक इलेक्ट्रॉन का साइज जो है दैट इज 1.9 into 10 raised to power minus 18. ठीक है, मतलब इट्स 0 point then 18 zeros and then 1 8. इतना ज्यादा छोटा होता है एक इलेक्ट्रॉन. तो that is the size of an electron. It's a very small object. That's why ये बहुत ज्यादा डिटेल्स हमें शो करता है उसकी जो
इंटरनल स्ट्रक्चर है सेल का उसकी। ठीक है। नाउ electrons they pass through or they are reflected from the object and they make images. Electromagnetic sorry electromagnetic lenses they enlarge and focus the image onto a screen. ठीक है, बेसिकली फोकस करने के लिए, बिकॉज आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करने की जरूरत होती है। एक तो ये कि आप इसको नॉर्मल कंडीशंस के अंदर विद इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यूज नहीं कर सकते। You need to create a vacuum in order to use an electron microscope. Why? Because uh, अगर आप नॉर्मली ऐसे ही उसको यूज करेंगे, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो आपने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप थ्रो कर रहे हैं, दे विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ एंड एज अ रिजल्ट it will not strike to the place where we want them to strike. Okay, that's why हम उसको वैक्यूम के अंदर थ्रो करवाते हैं। अब वैक्यूम में इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करने का एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि जब एयर सारी रिमूव हो जाएगी देन वी कैन नॉट स्टडी द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जो भी हम स्पेसिमेन वैक्यूम चैम्बर में डालते हैं, वो जो स्पेसिमेंस होते हैं दे ऑल आर डेड स्पेसिमेंस। ठीक है, तो हम किसी चीज की मूवमेंट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम किसी अलाइव ऑर्गेनिज्म को नहीं ऑब्जर्व कर सकते माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, हमें डेड ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व कर सकते हैं, बस दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाउ इज इट बेनिफिशियल? It's beneficial because it has a resolution power of about 0.2 nanometers. Now, a nanometer, 1 nanometer equals to 1 divided by 100,000 millimeters. Okay, so mm, it's 10 times more than a light microscope. And it's a thousand-fold improvement over light microscope. Electron microscopes, they can, again, इसकी magnification भी ज़्यादा है, वो 1500 times magnify कर रहे थे, ये 2,50,000 times objects को magnify कर देते हैं electron microscopes. ठीक है, तो using an electron microscopes you can view the structures of cells, you can view the structures of organelles, you can even view the structures of molecules, of proteins, of DNAs. ठीक है, biologists they also use two types of microscopes, as they say. There are two types of electron microscopes: a transmission electron microscope and scanning electron microscope. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाते हैं स्पेसिमेन से। ठीक है, दे आर ट्रांसमिटेड, दे पेनिट्रेट थ्रू द स्पेसिमेन और स्पेसिमेन के दरमियान से गुजर जाते हैं। टीएम से हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स चीजों के नजर आते हैं। ठीक है, जबकि ऑन द अदर हैंड जो एसईएम है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, उसके अंदर electrons they strike the surface and then they basically are reflected from the surfaces which are metal coated, and as a result you are only you will observe the surface. If you want to observe the surface of anything, of any object, then you use scanning electron microscopes. ठीक है, ये सिर्फ हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल सरफेस की डिटेलिंग देता है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल्स हैं वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देती है। एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लुक्स लाइक। ओके, and this is how its micrograph looks like.
नाइस. एंड बेसिकली इसका माइक्रोग्राफ ऐसे डायरेक्ट आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते. आपने देखा है कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इट इज directly connected with a laptop, with a computer, and it projects its images on the computer. ठीक है, इसलिए अपनी images जो है वो कंप्यूटर के ऊपर प्रोजेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जी, any questions? No, ma'am. Okay. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Okay, I hope so. Okay, girls, inshallah ta'ala, then I'll see you in the next lesson. Thank you so much for coming online. कोई question हो, कोई query हो, you can ask me later on. ठीक है? अल्लाह हाफिज.